When I ended the lecture, I told you that in the next lecture we'll discuss the role of B6 in glucose and lipid metabolism and the deficiency symptoms. Role in glucose metabolism, glycogenolysis, right? What is glycogenolysis? The process which breaks down the glucose and the enzyme necessary, glycogen phosphorylase. It requires pyridoxal phosphate as a coenzyme. ठीक है? Gluconeogenesis. Gluconeogenesis, conversion of non-carbohydrate sources to carbohydrate. And this requires the transamination. This process requires transamination. And you know that transamination requires pyridoxal phosphate. Lipid metabolism. It is an essential component of the enzyme that facilitates the biosynthesis of sphingolipids, particularly the synthesis of ceramide. Ceramide, you know, it is a fatty acid when combined with the glycerol. तो ये जो प्रोडक्ट होती है इसको हम कहते हैं ceramide. Synthesis of sphingomyelin. Sphingomyelin, it is present in the brain, right? It is required for the proper functioning of the for the brain. So pyridoxal phosphate is required as a coenzyme for the activation of serine, which is required in the synthesis of sphingomyelin. स्फिंगोमाइलिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, इसमें फैटी एसिड होता है, फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल होता है और अमाइनो एसिड सेरीन होता है. तो सेरीन जब एक्टिवेट होता है, देन इट कंबाइंड्स विद द fatty acid and glycerol and the phosphoric acid and the choline to form the sphingomyelin. Sorry, इसमें जो अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल नहीं होता है बल्कि स्फिंगोसीन होता है. Therefore, स्फिंगोसीन. व्हाट इज स्फिंगोसीन? देखो ग्लिसरॉल जो है ये तो 3 कार्बन अल्कोहल है, अगर आप नेट से स्ट्रक्चर देखोगे तो मिल जाएगा. वेरस जो स्फिंगोसीन है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है. तो it is required for the synthesis of sphingomyelin. What is sphingomyelin? It is a part of the constituent of the brain and the spinal cord, and it is required for the proper functioning of the brain. Biosynthesis of arachidonic acid. What is arachidonic acid? It is a 20 carbon unsaturated fatty acid. Breakdown of the sphingolipids. Sphingolipids मैंने आपको बताया all those lipids which contain the alcohol sphingosine. And I told you what is sphingosine. Sphingosine is a nitrogen containing high molecular weight alcohol. तो sphingolipids को जो एंजाइम तोड़ता है, it is sphingosine 1-phosphate lyase, right? This enzyme breaks the sphingosine, and the enzyme responsible for breaking down sphingosine 1-phosphate, it requires pyridoxal phosphate. So what is sphingosine 1-phosphate lyase? The enzyme which breaks down sphingosine 1-phosphate, and this enzyme is pyridoxal phosphate dependent. Hemoglobin synthesis मैंने आपको बताया था, और इसीलिए B6 जो है हम ब्लड के मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं, because it is required for the synthesis of heme, delta amino levulinic acid के साथ जब कंबाइन करता है ससिनाइल कोए, तो इसमें आपको रिक्वायर होता है. Required for active transport of amino acid through the cell membrane, and it is also required for the intestinal absorption of the amino acid. It is required for the transport of potassium from outside the cell to the inside of the cell. Gene expression.
यार देखो, जीन एक्सप्रेशन, मैं बार बार आप लोगों को एक बात समझाती हूँ कि जीन इज अ डीएनए, डीएनए फॉर्म्स आरएनए, आरएनए फॉर्म्स अ प्रोटीन. PLP has been implicated in increasing or decreasing the expression of certain genes. Increased intracellular level of vitamin decrease the transcription of glucocorticoids. ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनना कम हो जाएगा. अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, एल्बुमिन बनना कम हो जाएगा. लीड्स टू अ इंक्रीज जीन expression of albumin mRNA. Sorry, इसको एक दफा फिर देखो. PLP has been implicated in increasing or decreasing the expression of certain genes. ठीक है, PLP किसी जीन की यानी किसी प्रोटीन की के बनने को कम कर देता है या किसी प्रोटीन के बनने को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है. PLP either increases the synthesis of some protein or it decreases the synthesis of some protein. Increased intracellular level of vitamin B6, it decrease in the transcription of glucocorticoid, decrease कर देता है synthesis. विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो होती है, it leads to ये सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, it is decreased gene expression of albumin mRNA. PLP influences the interaction of glycoprotein with various transcription factor. इसलिए कि और ऐसा क्यों होता है कि some proteins are decreased, some proteins are increased, because PLP it influences the interaction of glycoprotein with various transcription factor. और जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करते हैं, आप लोग जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करते हैं, then the formation of the mRNA takes place and then the protein synthesis takes place. Vitamin B6 is involved in the synthesis of the coenzyme A from pentothenic acid. In B6 deficiency, coenzyme A level in the liver is decreased. Immune response. In liver B6 deficiency हो जाती है अगर, if vitamin B6 deficiency अगर, तो immunity आपकी compromised हो जाती है. Immunity is decreased. B6 deficiency, plasma pyridoxal phosphate less than 10 millimole per liter is indicative of vitamin B6 deficiency. Urinary level of 4-pyridoxic phosphate, अगर देखो यह नेचुरल सी बात है, अगर इसका मेटाबोलाइट यूरिन में कम है, इट मीन्स के इसकी डेफिशिएंसी है. जब विटामिन ही नहीं है तो उसका मेटाबोलाइट कैसे आएगा यूरिन में? सो द डिक्रीज यूरिनरी लेवल of 4-pyridoxic acid, it indicates the vitamin B6 deficiency. A deficiency of vitamin B6 alone is uncommon and often occurs in association with other vitamins of B complex. Alone it is not, it is uncommon. बहुत कम ऐसा होता है और इसमें दूसरे vitamins का भी रोल होता है अगर तो डिफिशिएंसी होती है. द clinical syndrome of vitamin B6 deficiency is seborrhoeic dermatitis-like eruption. Seborrhoeic dermatitis is a common skin condition that affects your scalp. Scaly patches आ जाते हैं, red skin हो जाती है, dandruff होती है. It can also affect oily areas of the body such as face, sides of nose, eyebrows, ears, eyelids and chest. Atrophic glossitis, the ordinary texture. अच्छा,
आपकी जबान पे आपने देखा है रफनेस है, ठीक है, छोटे छोटे कोनिकल्स हैं एंड इट इज रफ, इट इज नॉट स्मूथ। पैपिलरी प्रोट्रूशंस है, ठीक है, ये जो है जो रफनेस है वो क्या है, पैपिलरी प्रोट्रूशंस है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, दे टर्न इनटू अ सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर विद अल्सरेशन, बिल्कुल प्लेन हो जाएगी जबान, स्मूथ हो जाएगी और अल्सर्स अपीयर होंगे। एंग्लोचुलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। होठों के एंड पे, जहाँ से मुंह खुलता है आपका, उसके एंड पे दाने हो जाएंगे, ठीक है, जख्म हो जाएंगे। कंजक्टिवाइटिस, आंखें जो रेड हो जाती हैं, आईलिड्स रेड हो जाती है, जिनको अक्सर लोग फिर सन ग्लासेस लगाते हैं। Intertrigo is an inflammatory condition of the skin. Skin folds are induced and aggravated by heat, moisture, maceration, friction and lack of air circulation. यानी स्किन में फोल्ड्स होते हैं, उनमें जख्म होते हैं, और ये किस चीज़ से बढ़ता है, एग्रीवेटेड किस चीज़ से होता है, हीट से होता है, मॉइस्चर से होता है, या खुजलाने से होता है, फ्रिक्शन से होता है, लैक ऑफ एयर सर्कुलेशन से होता है। हियर यू कैन सी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। somnolence is a state of long desire for sleep or sleeping for unusually long period. Confusion होता है, ये सारे देखो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रेन की हेड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर ये सारे 1 2 3 4 जो भी है वो किए। कंफ्यूजन होता है, न्यूरोपैथी ड्यू टू इम्पेयर्ड स्फिंगोसिन सिंथेसिस, lowering of gamma amino butyric acid in the brain which causes convulsions. एकदम से दौरे से पड़ते हैं, and you know that it is a neurotransmitter, so it is associated with the brain. Sideroblastic anemia due to impaired heme synthesis. आपको पता है ये हीम बनाता है, ठीक है, हीम की सिंथेसिस में हेल्प करता है। The sideroblastic anemia are a group of blood disorders in which the blood has enough iron but is unable to utilize it for hemoglobin synthesis. क्या होता है? Iron accumulates in the mitochondria of the red blood cell, giving a ringed appearance to the nucleus. इसको कहते हैं ringed sideroblast. ये देखो, आयरन डिपॉजिट हो जाता है लेकिन हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होती है। Epileptiform convulsions in infants have been attributed to pyridoxine deficiency. It is related to lower activity of glutamic acid carboxylase. Gamma aminobutyric acid is not formed, which is a neurotransmitter. इसमें ये होता है, बच्चों में जैसे दौरे होते हैं ना, कॉन्शियस रहता है बच्चा लेकिन उसकी मसल कंट्रैक्शन ऐसी होती है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग मसल कंट्रैक्शन. So epileptiform convulsions have been attributed to pyridoxine deficiency. It is related to lower activity of glutamic acid decarboxylase, for which pyridoxal phosphate is a coenzyme. Consciousness is not lost. बच्चा कॉन्शियस रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, उसके हाथ पांव अकड़ जाएंगे. tryptophan-Niacin conversion enzyme kinase is pyridoxal phosphate dependent and its activity is impaired in vitamin B6 deficiency. इसका मतलब क्या होता है कि एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, राइट. B6 जो उसका कोएंजाइम था, B6 is deficient. एंजाइम काइनेज is not active,
ठीक है, and which this reduces the rate of oxidative metabolism of tryptophan and hence the rate of formation of guanylinic acid and NAD. If the intake of tryptophan is marginal, this could result in plagra. देखते हैं अभी, ये देखो काइनेज है ये एंजाइम. So the accumulation of hydroxyxanthralinic acid is increased. This enzyme requires B6 for its activity and B6 is absent. This enzyme is absent. NAD नहीं बनेगा, क्विनोलिक एसिड नहीं बनेगा, NAD नहीं बनेगा, ठीक है. अच्छा, नियासिन नहीं बनेगा. अब अगर सपोज करो कि ये बहुत ही मार्जिनल है तो नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी and the plagra like symptoms appear, right? If it is marginal then the plagra like deficiency appear. क्यों? इसलिए कि because tryptophan is a precursor of niacin. Here there is a defect in the kinase enzyme. Sorry, इसमें defect नहीं है बल्कि B6 is deficient. Therefore this enzyme is not working properly. There is a defect in the enzyme. ठीक है. Impaired tryptophan-Niacin conversion can be detected based on urinary excretion of hydroxyanthralinic acid after an oral tryptophan load. Oral tryptophan load दिया, उसको oral tryptophan दिया, लेकिन अगर ये चीज नहीं बनी, राइट, इसका मतलब कि ट्रिप्टोफेन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है हाइड्रोक्सीजैंथ्राइलिक एसिड में. क्यों? बिकॉज द काइनेज एंजाइम इज एब्सेंट. दिस इज द metabolic intermediate that accumulate and is excreted in vitamin B6 ingested animals after ingestion of the tryptophan. We'll just go back. You see, this enzyme is not here, ठीक है, and therefore hydroxyanthralic acid will not be formed, and in this way this is not formed. Kynine is converted to anthralilic acid, but this is converted to hydroxyanthralic acid, right? देखो kynine है, kynine is not converted to this hydroxy kynine, and this is not converted to because this B6 required by this enzyme is deficient, so it is not converted to this. लेकिन होगा क्या कि यहाँ से ये pathway block हो जाएगा. Now kynine, it is converted to anthralic acid. Anthralic acid is then converted to hydroxyanthralic acid. ठीक है. And is a metabolite intermediate that accumulates and is excreted in vitamin B6 deficient animals after the ingestion of tryptophan. Higher intake of B6 may decrease the risk for Parkinson. So since it is required for the neural pathway, for the neurotransmitters, it is good for your brain, so higher intake of B6 may decrease the risk of Parkinson disease. It lowers Parkinson disease risk by protecting the brain cells from damage caused by free radicals. How it protects the brain? By protecting the brain cells from the damage caused by free radicals. So it decreases the risk of the
protecting of Parkinson's.